Welcome back to studies. See, from all these 3 days, no, I hope from 1 week, right from 1 week you are busy in celebrating the festivals, in decorating your house, wearing new dresses, eating snacks, sweets, sharing each other, greeting your neighbors, your relations, parents, and also teachers also. And once again, I wish you all happy Deepavali. May Goddess Lakshmi, Mahalakshmi, bless you with health, wealth, and knowledge, and bless you, shower the blessings, and enjoy the festival. Now, let's back to studies. Today, I want to give the lesson in the Hindi, part 8. मैं, हम, तू, तुम, और आप. So, where are these words used? How to use these words in Hindi? मैं means I. It is singular. It is used in the case of I, singular. Hum is used in the case of plural, we. Tu, singular, you. Tum, plural, you. Aap means it is also plural, you. So let us read. Children, when I go on reading, you also keep finger and learn to read. मैं गोपाल हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ. So this is Gopal. He says मैं गोपाल हूँ. I am Gopal. मैं छात्र हूँ. छात्र means student. I am a student. मैं स्कूल जाता हूँ. I am going to school. I go to school. I am not. I go to school. Next. मैं सरला हूँ. This girl name is Sarla. She says I am सरला. मैं सरला हूँ. मैं छात्रा हूँ. See here. She is student, but this boy is the gender. You have to see the gender students. Feminine and muscular gender. Chhatra is in case of male students. Masculine gender. Chhatra, female. Masculine and feminine gender. In case of girl, मैं छात्रा हूँ. I am student. मैं लिखती हूँ. I am writing. हम लड़के हैं. हम is used in case of plurals. We are boys. हम मित्र हैं. We are friends. हम पाठ पढ़ते हैं. We read lessons. We read पाठ पढ़ते हैं. हम लड़कियां हैं. हम is used in the case of plural for masculine and also feminine gender. हम लड़कियां हैं. We are girls. लड़कियां, girls. Plural. लड़की singular, लड़कियां plural. हम खेलती हैं. See here, खेलती है means they are girls. Feminine gender, so खेलती है. हम साथ रहती है. वो सब साथ रहते हैं. They all live together. तू मोहन है. तू in case of singular, तू. You are मोहन. तू दूध पीता है. You are drinking milk. तू बलवान है. You are strong. बलवान means strong. So this is how मैं, हम, तू, तुम, आप are used here. For तुम किसान हो. You are farmer. किसान means farmer. तुम हल चलाते हो. You plug
P-L-O-U-G-H, fluff. See, they work in the field with fluff. तुम अन्नदाता हो. So he gives food, he produces food in the fields. So he is said to be अन्नदाता. आप अध्यापक है. आप means in case of plural is used आप. You, plural you. अध्यापक है means you are teacher, शिक्षक है. आप कविता सुनाते हो. He listens to the children the poem. So कविता सुनाते हो. आप लिखना सिखाते हो. आप लिखना भी सिखाते हो. लिखना means writing. You teach us writing. सुनाते listen. लिखाते means writing. सिखाते means to teach. So अध्यापक क्या करते हैं? वो सुनाते, कविता सुनाते हैं, लिखना सुनाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, लिखना सिखाते हैं, सब सीखते हैं. So this is how तू, तुम, हम, आप are used in this lesson. उदाहरण के अनुसार सही वाक्य लिखो. So before entering this अभ्यास, you have to write this lesson in your Hindi part. This Hindi part you have to write in your Hindi lesson note. In Hindi notebook, write this and this up to this, then up to this. All these Vyakaranaansh you have to write in the Hindi notebook. Let us see what is there. मैं लिखती हूँ. तुम लिखती हो. आप लिखती है. See how it is used. See, मैं लिखती हूँ. मैं हूँ. तुम हो. आप है. So like this you have to use wherever मैं is used हूँ, मैं हूँ. Wherever तुम is used you have to use हो. It is not तुम है, मैं तुम हूँ, तुम हो, आप है. मैं पढ़ती हूँ. तुम पढ़ती हो. And आप पढ़ाती है. See like this you have to use the words. मैं खाता हूँ. मैं, तुम खाते हो. तुम हो, तुम खाते हो. आप खाते हैं. Yes. मैं जाता हूँ. तुम जाते हो. आप जाते हैं. मैं गाती हूँ. तुम गाते हो. आप गाते हैं. मैं देखता हूँ. तुम देखते हो. आप देखते हैं. मैं हंसती हूँ. तुम हंसते हो. आप हंसते हैं. So like this you have to read and write these सही वाक्य. Go to next question number 2. वाक्यों को पढ़ो. उदाहरण के अनुसार लिखो. So whatever examples are given like that you have to write in your notebook. उदाहरण. मैं पढ़ता हूँ. मैं पढ़ती हूँ. This is the gender is changed here. Masculine gender, feminine gender. तुम खेलते हो. तुम तुम खेलते हो. आप लिखते हैं. आप लिखते हैं. आप लिखते हैं. तुम आते हो. तुम आते हो. मैं चलता हूँ. मैं चलता हूँ. The same you have to write, read and write. तुम जाते हो. तुम जाते हो. नेक्स्ट. क्रम से लिखो. मैं सी हाई गोपाल में. सो यू हैव टू जोड़कर लिखा. wherever the pronoun verb has to come according to the sentence you have to write. They are puzzled, so you have to write according to the sentence. मैं गोपाल हूँ.
Like this, we have to write the last. My Gopal. मैं गोपाल हूँ. जाता मैं हूँ स्कूल. First you have to write my. मैं हम तुम. First starting word should be मैं हम तुम. मैं स्कूल जाता हूँ. हम लड़कियां हैं. तू है पीता दूध. तू दूध पीता है. पहले तू हम आप have to write the words, these words. हो अन्नदाता तुम. So first you have to write तुम. अन्नदाता हो. कविता आप है सुनाते. आप कविता सुनाते हैं. आप कविता सुनाते हैं. So all these you have to write in the Hindi notebook. Have a good day.